finally we are here. Hi, good evening. Let's start another session, and just let me quickly know if you can see the screen and hear my voice, and then we go ahead. Yep. Hi, Vishal. How are you? Good evening. Let's quickly start the session. If you can hear my voice, just let me know, and if you can see the screen, then we go ahead. All right, then let's just quickly go ahead, and before we go ahead, let's just quickly go through the disclaimer that derivative market and equity markets are highly risky assets to trade, and one should always take financial advice from a financial advisor. I'm not a registered broker or a financial advisor, so I'm not here to advise you when to buy or when to sell, but I'm just here to share my information that I have collected over a period of time, and these are the concepts and observation of some good traders of their time, and I have not created anything new here. I'm just collecting these information the way they suits me, and I compile them together to make something useful for myself. Well, with that note, let's just quickly go to the part where we were yesterday. We were talking about what was auction strength, and we took care of some of the important points that you can just see while managing or measuring the auction strength. That where it opens up, where is the IBREX, that means initial balance range extension,
We've spoken about this for the shorter time frame. We spoke about it that when the market, that your idea is to take some intraday trades, then where you should be looking and which points you should be looking to find out an early exhaustion or early points of failed effort of you can say traders or that particular point of time, whoever has the inventory. So that was the idea for all these you can say observation points. These observation points are definitely meant for the shorter time frame, but that does not mean that you cannot use them on a bigger time frame as well. They're just gonna change a little bit at a bigger time frame. So today we're gonna take care of that as well, and we've spoken about it for the higher time frame too. That what higher time frame people should do. Before we quickly go to that, let's just once take a small recap sort of stuff that we understand the open. We understand. Let me just give me a second, guys. Yeah. Yes. So we understand that we were talking about some open, that where the market opens up, that gives a good idea. That is one information point. Then the second information point is the initial balance range extension. That means the first 1 hour activity. Then OTFing and range extension on the market profile chart. That means every in an uptrend, every higher high that it makes, that is the range extension. Range is getting extended, and from below it's getting supported by OTFing, like one time framing. And same goes to the reversal side. Every down extension is the range extensions, and every point it was supported from the back as well. Those are the one time framing happening towards the downside. Then we had a VWAP. VWAP was we put it on a 5-minute chart to see that if market opens up in certain way, then VWAP can be just the average price, volume weighted average price, where market if try to come up towards, you can take a sell position. We spoke about that as well. We spoke about some of the exhaustion signs, signals like weak high, weak low, or poor high, poor low, overlap, or inside bars. So a weak high, weak low means when you have some references from the left side, and exactly from the same point market has reversed. Those are some of the weak highs, or maybe weak lows, you can say. If the market has returned from the bottom, people can say double bottom as well, or a double top. They might just give you some momentarily a shift, but it's not a trend change. Then market would again try to come and find out whether the selling was like a good idea or not, or maybe by that process you might end up making a triple bottom or something. But you'll get to know through the follow through whether it's going to sustain or not. That is the idea. Then and by all these things you get to see that how these things are correlated in the market. One thing has a different name in one study, and other thing has the different name in that other part of the study, but they are all making the same sense, like if you just see them together, right? then then we had for continuation of a trend, or for strength of the auction, we had point of control migration. That means every time when the market is shifting up, the point of control where the maximum activity had happened should be shifting up, and not having this sort of activity that it can take one day off, it's fine, but it should keep continuing going up, shifting up. The lesser overlap, the better it is. The more overlap it has, then it means that it goes into some sideways activity first, and then they're going to be a breakout or a breakdown towards one side. So market can just stick into some of these activities sometimes, and you'll get to know that it's in a sideways zone. Does not make much sense, and suddenly it would just go down or spike up. We are into this situation right now in our current market scenarios. Okay. Then we had some anomaly formation. Anomaly formation was usually when there was an imbalance in the market. We've spoken about it so many times that when there is an imbalance, that means discovery day. As I said, different names for same thing. Market profile structure would be very much elongated. The volume would not be nicely distributed everywhere. It's like not nicely distributed in a uniform shape, but will be having some single prints as well, some lesser volume nodes, some bigger volume nodes, some low volume area. So there will be LVNs, there will be single prints, there will be HVNs. They're going to be everything in that structure, and those anomalies then market tend to sometimes fix. And we can relate to this concept by the point that when market travel from one point too fast, then it try to fill that area back again with some sort of volume activity again.
later in time, of course at a bigger time frame. Then abnormal volumes. Abnormal volumes are those volumes that we spoke about that like it's not a horizontal volume, it's a vertical volume we are talking about here. Vertical volume was, when the, we can say, effort versus result was small. That happened in Nifty that day when we started taking our, you know, that what do you call, analysis forward on the charts. So this is this time when you could see that the average volume was above than the previous day's volumes, and the activity was lesser in terms of price travel. Then you get to see that there is a lot of, that means, selling or the other side activity happening. And in a uptrend continuation, when there were so many sideways days happening, and suddenly you get a such this day, then there are chances, if market opens up in the tail area, then there are chances of a down shift, so that to find out the buyers at the lower side who actually initiated this swing, they're going to test their strength once again. So these are the ideas. As I said, these are one or two simple ideas, but they're going to replicate themselves in every form at a different time frame. So you understood this much part, I think, very nicely. There was nothing complicated about it. But when market runs, then sometimes we tend to forget these things and we just see price moving. So we have to be like a little away from that. Now we will use these parameters and information points to do what? Value area displacement. That value area placement is directional or sideways, whether the one that we have spoken about. If the value area is shifting consistently, it's great. If it's not shifting, then it's a sideways day. We see the OTF again, range extension. We see the exhaustion signals, that is weak highs, weak lows, and point of control happening. That means prominent point of control when market did not actually go anywhere. Like today's day was sort of like a normal distribution in Bank Nifty, if you're gonna go and see, but it's gonna be like in terms of Bank Nifty, it was a very small range. And then there is some overlap happens when there are days that could not go anywhere, like when there is a big day that happened, and then there are small days just fiddling in that range and not giving any range extension anywhere, and just not able to decide where they want to go with all this activity. That is like overlapping of the day. These things tell us that the market is stalling, and they are in a zone of consolidation. Abnormal volumes we've spoken about. Reaction at prior references, that means the swing lows and swing highs. Last time we spoke about that. And then at the end we spoke about the end of the day profile shape. That was the P and B shape or D shape, and we spoke about it. If the value is attached at one area, and if it's a D shape, then there are chances that those areas gonna fix and return to the value back again. Very less chances that it's gonna just continue the journey up, But as I said, there are small signs that you have to see what happens at the end, towards the end. When is it happening? What is the context behind it? If there is a context, then it's right. So basically, if this happens, say, let's say in a uptrend towards the end, then it's not a good idea to wait for this pullback, because it's an uptrend and it's going to continue, like that. But if this D happens towards let's say some sort of a sideways activity, that there is some sideways activity happening, market has been going in up and down and up and down, and suddenly at this point you get some sort of consolidation and a D shape happening suddenly, then definitely it's a breakout. It's not a trend continuation, but it's a breakout. But then if that does not give any follow through, the market might just take it as a test and return back into the range. So this context is different than the context of a range extension day and continuation of the day and then makes a D. I hope you able to see the difference, because this D can still like a continuation of the point and market can still go up. So you really need to see that where are these happening. So in a very uptrending market, these extensions might not just get recovered, they just gonna continue only. But if it's a sideways market, then the context will help you and tell you that yeah, this can be a test. For that you have to just see whether it's getting the follow through or not, or there is some exhaustion at the smaller time frame, and market might just come back to this area, back to this range, and then later then when you're going to go and look in the history, you see it as a test out of the range. That can happen. So that's why context is important, that where it's coming from. All right. And we spoke about the P shape and B shape as well. It's towards the end of the trend, like in a downtrend, a P shape can still show a reversal. Same for the B shape, can show a reversal. Can be a sign of the reversal when it has initiated the activity to the top first, but the whole day then struggle to go up back again and
connected the whole volume area at the back and still down, then there are chances of going down. Similar case for the V shape, that it went quickly down but then recovered quickly and then tried to go down again but could not, and then it continues the journey on the other side. So this whole big rejection area can be then called like excess, that we had given a name, or you can say in the market profile chart this is called excess. In the candlestick charts it's going to call like a tail or rejection area. So those things. Alright, then keeping track of the market on the MP charts and remember the concepts. These are the two things that we have to do while taking care of our trades, if you're from the higher time frame or the bigger time frame. Now, some of the common setups that we have seen or maybe discussed as well. I'm going to go to the charts quickly as well and just going to talk about all these things. Where are these things happening? But a failed auction is nothing but when the auction is failing, that means the trade facilitation is not giving the follow through and failed. That is just a rejection. That is a failed auction. Absorption of supply and demand to some sort of a swing point, when there is some sort of a left side area which is there, some reference, and market goes there and does not react with less time and do the second part, which is spending time. That is the absorption of supply, or could have happened at the lower point. This is the point of interest now. Now, point of interest is it could have gone up in the first go, spending less time, but if it spend more time here, then it's the absorption of demand. So we have seen these things as well. We have spoken about these things as well. So you understand them, I think, now by now. The 5 points that we have discussed, that it should be just taking at any reference when it reaches, it should be either just taking less time and get respected by the area, or you can say rejected from that area, whatever you want to say. And as I said, there are no fixed names. You can just give it your own name. So this is less time, or otherwise then you're going to do the unexpected behavior to it, which is spending more time. And spending more time will be the absorption of that area, can be absorption of demand or supply. And the third was spending too much time. If this does not happen, then the next unexpected behavior is that it spends too much time and did not give follow through in that direction, then it reverses in the other direction. Or the fourth one was that it just goes through it, like we have 5-1. It can just sometimes take the inventory adjustment break as well. That was there. So there was an inventory adjustment break that market wants to go there. The less time one, this I'll keep it here, that it spent the less time, the reference where it reach, sometimes it does not go from there, sometimes it just take the liquidity and then reverse. That is sweeping the liquidity. That is your second part. And then you come to the fifth one, which is your that it goes through the reference straight away. That is your context based thing that we have already spoken in the last, like day before yesterday class. Alright, well, that was the absorption of supply and demand. Failed auction is spoken. Now, inventory adjustment break and rallies are the things, as I spoke about, that inventory adjustment break happens to some sort of level, visual level again, can be a trend line, can be a horizontal resistance or support, like a swing. Wherever there is inventory placed, you can say, wherever there are stop loss placed below an area, market can just tap into it and reverse quickly, like that. When it does that, then it just accepting that thing, that it continues in the same direction. And we've spoken about this idea as well, that if there is some sort of, let's say, sideways market, and let me just draw it nicely for you. Give me a second, guys. Yeah, so why, and I've done it like so many times, I guess by this time you already know what I'm trying to do or say here. If market is in a sideways range and market has been pulling every other time in these areas, of course it's not going to be that perfect, but whichever ways, you get the idea that every time people are buying here, then you know that it's such a visual reference that if somebody like a smart money who is actually having an idea of from this consolidation, we don't know where it's gonna end, whether it's a consolidation ending up into a accumulation and mark the price up, or a distribution and mark the price down. We don't know that while the time it's happening, and sometimes that's why the fake out happens. But what we can see, the early signs of absorption, supply or demand to some area, and then the follow through it. So if market tends to break this, let's say अगर उनका objective है accumulation का,
for once we just assume it. I'm not saying that you have to assume while doing the market analysis. I'm just saying, let's just say in this example, if they were supposed to push the price high, that means they are buying here. If they are the buyer in this area, what they will do, that their most of the inventories are then here at this area, right? They know that every time when people have bought here, people whoever has booked as well, but some people don't book, so they just buy at the lower point so that they can just take some benefit later, or maybe some of the liquidity of this particular time frame only is right here. They just gonna lose their position the moment market just gonna dip down a little bit down. So these strong buyers, these smart money, what they have to do is they're just gonna dip it a little bit, कलेक्ट ऑल द इन्वेंट्रीज। यहाँ पे इनके सबके जितने भी बायर्स थे इन सबके एक सेल मार्केट ऑर्डर लगे होंगे क्योंकि वो उनके स्टॉप लॉस ऑर्डर है, और स्मार्ट मनी के यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगे होंगे, बाइंग ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर। नाउ ये लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। जब ऐसा होता है तो वो इन्वेंट्री शिफ्ट करते ही अगर वापस चेंज हो जाए, then we have to see concept of you can say from the forex market, it does not that much gets validated in our market again because of the time difference. But if they have the idea of going up and not breaking through this range and going down, if that is not the idea and if this is the idea, then the sign that you will get is, of course they'll tap into it, they'll get a quick reflux up because they just wanted to enter and they just entered and moved up because there's so much position to buy. सो उस बाइंग पोजीशन की वजह से वो प्राइस एकदम से मार्क अप हो जाएंगे और एक बड़ी सी टेल आपको दिखाई देगी विद some big body or small body or whatever, whichever ways, and then there has to be a continuation of this thing, and then prices should not come to this tail area. अगर ये हो रहा है, so then you are very sure that after this action happening at one of the side, maybe at lower side, then towards the upside it might just reach, consolidate and break out for a bigger move. These small signs can actually give you a big move. Just to understand key what was the context. The context was throughout this consolidation they were accumulating, and the signs are now visible because it has tapped into the area of stop losses and moved quickly. These two things, let me say it again, tapped into the area of stop losses, that means the liquidity, and it's been swept and they moved quickly to never return into that tail area again. जो भी tail area market छोड़ के फिर ऊपर जा रही है उसमें फिर दोबारा से कभी उनको अगर नहीं आना है, that means you still have, of course you will say कि then my trade entry is missed, now this much big stop loss I don't have to put. You don't have to enter here. What you have to do is you just have to then see कि after this the expected behavior is to break out of this range, right? क्योंकि जिनको इनके नीचे टैप करके लिक्विडिटी ऊपर लेके जाना था उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो अब इस रेंज से बाहर निकल के प्राइस बहुत ऊपर मार्क करेंगे और इतनी ही रेंज तक का कोई दूसरा रेंज बनाएंगे जहाँ पे जाके वो तब जाके अपनी लिक्विडिटी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपके पास अभी भी बहुत रूम है जाने का, और कोई भी पुल बैक जो आपके सेटअप में अच्छा आता हो, चाहे वो यहीं पे बन जाए या चाहे वो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ डिमांड में बन जाए टूवर्ड्स वन डिप एंड गो अप, then you can enter those things. So I know मेरी drawing थोड़ी ज़्यादा बुरी है, but I hope you understand the concept what I was trying to say here. So that was the idea of inventory adjustment breaks or rallies. The inventory adjustment breaks sometimes happen and market goes in the opposite direction. That is a fake out. Usually people say that fake out. We have spoken about that as well in the early days, if you remember, that there is a range, and that range if goes out quickly and reverse, this is what we called it like a fake out in the initial days when we were talking about when we were talking about Wyckoff cycles. But now you know as well that this is not only a fake out, this is a rejection candle, this is a test, this is a liquidity sweep and everything. And इसके against अगर आपको बड़ा move मिल गया है तो next expected move should be break out of this range and mark the price towards this side, because all over this time you were, that means, distributing, and now you're gonna go down here. So these are the some sort of ideas that you need to be open with, right? Cool. Then उसके बाद हम बात करते हैं कि let me just take this off from here. Yes. So उसके बाद हम बात करते हैं कि मार्केट में
जो हमारा वी वैप क्रॉसओवर्स और पुल बैक्स है, तो वी वैप क्रॉसओवर और पुल बैक जो है वो आइडिया था कि जो एवरेज प्राइस है हमारे यहाँ पे, या एवरेज प्राइस ऑफ द डे, अगर मार्केट उससे नीचे जा रही है तो वो नेगेटिव डे है, और एनी पुल बैक टू द वी वैप वुड गिव यू द कंटिन्यूशन फॉर दैट पर्टिकुलर ट्रेड, right? That was one thing. And then the second thing, let me just clean this for you so that I can draw it nicely afterwards. Yes, better. There you go. So we were talking about that VWAP क्रॉसओवर्स एंड पुल बैक, कि अगर एक VWAP हमारे दिन का कोई एक पर्टिकुलर मूव है, और अगर वो दिन में VWAP टिल्ट हो गया है नीचे की तरफ, दैट मीन्स नेगेटिव डे, इट कैन बी साइडवेज डे एज वेल, देन एनी पुल बैक टूवर्ड्स द VWAP कैन गिव यू अ short entry back again, depending the context. As I said, it's important. You cannot just say कि market started here, gone down, and now it's coming here. It would go down technically, yes, but अगर वही follow through नहीं होता है कि less time, much time or more time, sometimes it can go through as well. कि आपको पता होना चाहिए कि उसने अपने नीचे की जर्नी कंप्लीट कर लिया, तो it would go through and ending up into sideways day, and then VWAP would continue with the price rather than continuing to the downside. So as I said, VWAP is just a technical indicator that follows the price. So if you can understand price better, then you'll be able to think ahead of the VWAP as well, whether it's this time it's gonna reject from the VWAP or gonna stay on the VWAP or what is it. So VWAP pullback and crossovers, those were the things. Now more often than not, I will take a trade based on the context by asking what happened in the markets and what did not happen in the market. That is my expected and unexpected behavior. That's what I learned from one of a good trader. His name is Dean. That's what his concept about this whole market profile chart has come from there only. That's what I learned from him, and he used to speak about this a lot, the context and the you know like the behavior that you're trying to make, expected and unexpected behavior. And there is one more thing that he used to speak about, that was the potential auction path. Usually the way I said, again, a name, but usually the thing that we create right now, you must have seen all these days that I try to find out, not predict, but find out if today's day is here, what can be the possible chances for the next day, and what is about to happen. And if I know that there is some sort of reference here, that market has made a reference or some sort of HVN or something, or that means we are at a support. And if we are at a support, then expected behavior is, first of all, should touch and go. If that does not happen, then you spend more time. That means you're going to the second behavior, which is you're going to spend time and go through it, right? So all those things are just going to give me the idea of where you're going to open and what can be the next potential auction path. That means I'm going to draw कि अच्छा अगर हम यहाँ खुले तो that means it's already has taken that idea and हमने ऊपर शिफ्ट होना शुरू कर दिया, तो हम इस एरिया से सपोर्ट लेकर के ऊपर जा चुके हैं. दैट्स वाई दीज थिंग्स आर ओपन, कि कहाँ पे ओपन हो रहा है, उसका फॉलो थ्रू क्या रहा कल के पूरे दिन का, वो अगर आप स्ट्रक्चर के अंदर जाके समझ पाएँ तो आपको थोड़ा सा एक एज मिल पाता है, राइट? सो दैट वाज व्हाट वाज ही यूज्ड टू कॉल पोटेंशियल ऑक्शन पाथ, कि उसका ऑक्शन का पोटेंशियल पाथ क्या हो सकता है. इट कैन बी, अगर अप साइड है तो कैसा होगा, और अगर डाउन साइड है तो कैसा होगा. बट दैट वाज वन थिंग, दैट इज वन टर्मिनोलॉजी. But when you do these things, expected and unexpected behavior, and you trying to make some sort of potential action path, and when that does not work, then you're trying to find out who was responsible for these recent market movement. और उस चीज़ से हमें पता चल पाता है कि क्या मार्केट की जो इन्वेंट्री है वो शॉर्ट स्विंग ट्रेडर्स के हाथ में है, जो इंट्राडे के ट्रेडर्स हैं, जो मार्केट को आज इसी एरिया में रखने वाले हैं, जैसे कि आज के दिन में हुआ. Today was an expiry, and for both the indexes, because tomorrow is a holiday. So market stayed in one consolidation only. It did not go up, it did not go down, and option sellers must have made money, good money after so long. But market was at a support level and stayed there, did not break it. At a support level, stayed there, did not go above it, but just stayed here only. So that was the idea today. So I'm going to talk about it when we're going to go to the charts. But before than that, let's go to our next point, because we have to speak about how to take these trade setup in the process. So what is the trade preparation process on short time frame? शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जो आपका ट्रेड प्रोसेस होगा, जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने देखी है, उसमें सबसे पहला पार्ट जो हमने डिस्कस करा था वो था हमारा कि ओवरऑल ट्रेड फैसिलिटेशन में आपको ये देखना है कि कल क्या हुआ था. और कल क्या हुआ था, दैट मीन्स यस्टरडे ट्रेड. ओवरऑल ट्रेड फैसिलिटेशन कैसा था, क्या वो एक ट्रेंडिंग डे था,
क्या वो नाइस ट्रेंडिंग डे था, क्या वो रेंज शिफ्ट वंस इन अ एक्शन था, डी शेप, सम सॉर्ट ऑफ पी शेप, ये कहाँ पे हो रहा था, वो सारी चीज़ें आपको पहले देखनी होगी कि पीछे कल के दिन में क्या एक्टिविटी हुई थी। अकॉर्डिंगली आपको कुछ इंट्राडे के रेफरेंस मिलेंगे। अगर वो एक लेट्स से एक अप ट्रेंड में एक ऐसा दिन बना था जो एक लेट्स से extended तो नहीं था, but let's say it's a normal neutral extreme day. Neutral extreme day, if you remember, we have spoken that the market stays in a range and then try to go up but does not go there, and try to go to the next extreme low and does not go there as well, and end up somewhere here. So if market has tested both the side at this point somewhere, देन यू ट्राई टू सी कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे हो रहा है कि आप एक अप ट्रेंड मार्केट में अप और डाउन दोनों तरफ को मूव देने के बाद साइडवेज रह चुके हो। तो नेक्स्ट एरिया क्या हो सकता है कि आप इसी ट्रेंड की कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ जाने की कोशिश करें, समथिंग लाइक दैट। आई एम जस्ट गिविंग वन रैंडम एग्जांपल। तो आपको ऐसी जगह पे अब कुछ रेफरेंसेस मिल जाएंगे कि अच्छा अगर हम कल के लो से नीचे जाएंगे तो शायद एक मूव आ सकता है टूवर्ड्स दिस साइड, और अगर ये कल का लो है तो हमारा नेक्स्ट स्टेशन इज़ द नेक्स्ट सपोर्ट एरिया विच इज़ दिस। तो अगर नेक्स्ट सपोर्ट एरिया ये है, हम यहाँ पे हैं, तो अगर हम ओपन ही यहाँ पे होंगे डाउन साइड तो हम नेक्स्ट सपोर्ट एरिया तक ट्रैवल करके वापस ऊपर जा सकते हैं। सो दैट मीन्स द प्रीवियस डे एक्टिविटी विल हेल्प यू कि ओवरऑल ट्रेड फैसिलिटेशन उसका कैसा था, उसका वैल्यू एरिया जो था वो किस तरफ था, वैप किस तरफ था, और उसके बाद उसका प्रोफाइल शेप कैसा था, क्या वो न्यूट्रल एक्सट्रीम डे था, क्या वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, क्या वो एक ट्रेंडिंग डे डाउन साइड था, क्या वो एक डिस्कवरी डे था जो बहुत तेज़ी से नीचे आ गया। देन देयर आर चांसेस कि देयर आर एनॉमलीज एज वेल, एंड इफ वी आर एट अ गुड सपोर्ट ऑफ अ हायर टाइम फ्रेम देन वी कैन जस्ट स्टार्ट गोइंग बैक अप अगेन। ऑल दोज थिंग वी हैव टू सी फ्रॉम द येस्टरडेज ट्रेड एक्टिविटी, जिसका ओवरऑल ट्रेड फैसिलिटेशन, उसका शेप और सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए, उसका प्रोफाइल शेप, उसका वैल्यू एरिया कहाँ पे है, एंड अदर रेफरेंसेज कि वो पिछले टाइम में जो भी स्विंग्स बने हैं उसमें कहाँ पे है, कि वो एक सपोर्ट से पहले ही अपना स्ट्रक्चर बना रहा है, या सपोर्ट पहुंच गया है, या रेजिस्टेंस पे पहुंच गया है, यानी किस जगह पे ये एक्शन कल का हुआ था। जब आपको वो एक आइडिया मिल जाता है उसके बाद एक बड़ी पिक्चर या कॉन्टेक्स्ट आप क्लियर कर पाते हैं। एंड देन कम्स द सेकेंड पार्ट विच इज़ आफ्टर द फर्स्ट पार्ट गोज फ्रॉम द प्रीवियस डे एक्टिविटी, देन द सेकेंड पार्ट गोज कि where it's going to go open. Now, is this predicting the market? No, it's not predicting the market, but as I said, it's a potential auction path. पोटेंशियल ऑप्शन पाथ की ऑप्शन किस तरफ जा सकता है अगर इस तरफ ओपन हुआ तो। वुड इट हैपन दैट वे? नो, बट इफ़ यू गोना मेक अ स्टोरी बिहाइंड इट कि अच्छा अगर हम यहाँ पर हैं और आज हमारा सारा मोशन डाउन का है, बट अगर अनएक्सपेक्टेडली मार्केट अप खुलता है तो उसका मतलब है कि दीज सेलर्स हु सोल्ड हियर लास्ट टाइम गॉट सम फॉलो थ्रू एज वेल एंड नाउ पैनिकिंग बिकॉज उनकी पोजीशन से हम ऊपर आ गए हैं। सो चांसेस है कि एक अप मूव देखने को मिले, और उस अप मूव के बाद का फॉलो थ्रू क्या मिलेगा, क्या हम यहाँ पे दोबारा सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर जाएंगे। आप इस तरह का एक पोटेंशियल ऑप्शन पाथ बना सकते हैं। तो दैट पोटेंशियल ऑप्शन पाथ इज what we are talking about, and of course I'm not going to just draw it here, I'm going to come to the charts as well. Then open with respect to the prior days range कि कल की रेंज कितनी थी, क्या हम उस रेंज से बाहर ओपन हुए हैं, अंदर ओपन हुए हैं, या उस रेंज के अंदर ओपन होकर ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके हाइज और लोज भी मैटर करेंगे। क्या वो डे एक लॉन्गर डे था लाइक इन टर्म्स ऑफ द रेंज, क्या वो एक शॉर्टर डे था, या इट वॉज अ बिगर डे लाइक अ डबल डिस्ट्रीब्यूशन डे और समथिंग लाइक दैट, एंड वी ओपन राइट देयर एट द मोमेंट। हम नीचे डिप लेकर के आ चुके हैं, तो चांसेस आर दैट वी माइट जस्ट ट्राई टू see the value area high or the top of this range as well if we are expecting another activity of sideways range for some days. So all these things gonna make so much sense when you gonna see the previous day कि क्या हुआ है, previous day का overall trade facilitation कैसा रहा, उसका shape कैसा रहा, value कहाँ shift हुई, और प्रोफाइल शेप के बाद ये रेफरेंसेस जो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे थे वो कहाँ से आ रहे हैं, बिग पिक्चर में क्या चल रहा है, उसके अगेंस्ट जो कल का ट्रेड फैसिलिटेशन था उसके अगेंस्ट आज हम कहाँ खुले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि उस दिन जो प्रीवियस डे ट्रेडर्स की पोजीशन होती है, अगर वो नेक्स्ट डे कैरी करके लेके जा रहे हैं और उससे कुछ ऑपोजिट हुआ है, देन देर आर अनएक्सपेक्टेड रैलीज दैट हैपन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे। देन ओपन विद रिस्पेक्ट टू द प्रायर डे रेंज, आप रेंज से बाहर काम कर रहे हैं, रेंज के अंदर ही हैं प्रीवियस डे के। अर्ली कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द ओपनिंग, नाउ दिस इज समथिंग दैट सम पीपल टेक इट एज अ ट्रेड एंट्री। आई डोंट कंसिडर इट एज अ ट्रेड एंट्री। दैट मीन्स जैसे ही अर्ली कॉन्फिडेंस, मतलब कि जो रेंज एक्सटेंशन है, क्या वो सिर्फ छोटा सा नैरो रेंज एक्सटेंशन है ए एंड बी का, विच इज़ आपके जो रेंज एक्सटेंशन आते हैं ए कैरेक्टर के, एंड अगर बी ने रेंज एक्सटेंशन दिया है, क्या वो बहुत ओवरलैप्ड है, और इज़ इट अ अर्ली कॉन्फिडेंस? दैट मीन्स ए यहाँ पर बना
and the B has gone all the way up to the top, till the top, giving so much range extension. So these things can be a good drive as well, but then as I said, जब तक पीछे का पूरा कॉन्टेक्स्ट ना पता हो कि पीछे लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है, यू कैन नॉट जस्ट से कि ये कंटिन्यू ही चलता रहेगा. So these things are not dependent on initial balance range extension, or it's going to be depending more on the range extension कि क्या वो continuation range extension दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा. So that is what we have to see, and then we come to the third point, which is डेवलपमेंट मार्केट डेवलपमेंट हमें उसी तरीके से पता चल पाएगा जब हम देखते हैं कि किसी एक ट्रेंड में OTFing और रेंज एक्सटेंशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर उनमें देयर इज़ अ लैक ऑफ इट. वी स्पोकन अबाउट दैट थिंग, वी आर जस्ट राइटिंग इट इन टर्म्स ऑफ स्टेप्स हियर. देन डेवलपिंग वैल्यू एरिया, अगर ये ट्रेंड अप है या डाउन है तो उसका वैल्यू एरिया भी ऊपर नीचे शिफ्ट होना चाहिए. कि अगर अप मूव में वैल्यू एरिया शुड बी शिफ्टिंग अप, and in a down move value area should be shifting down and with a lesser overlap. Potential absorption, supply and demand at some stationary references. जो previous किसी swing के आसपास अगर हम आए हुए हैं, कोई बड़ा swing है और अगर हम वहाँ पे अब पहुँचे हैं तो वहाँ पे potential है कोई किसी तरीके का absorption करने का, तो हमें पता चलेगा कि मार्केट अब इस लेवल के ऊपर जाना चाहती है. That is the potential absorption of demand or supply at that reference, and when that happens you get some sort of a consolidated day, and then next day you might just get a follow through, right? Then the time frame analysis is अगर हमारे पास हायर टाइम फ्रेम के पास इन्वेंट्री है, लोअर टाइम फ्रेम की इन्वेंट्री है, अगर आप ये फिगर आउट कर पाएँ तो आप ये फिगर आउट कर पाएंगे कि आपको आज ट्रेड एक हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लेना है या लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग लेना है. जैसे कि अगर आज का दिन सिर्फ रेंज बाउंड ही रह गया है, हम एक रेंज के अंदर टाइटली फंसे हुए थे और जब तक वो रेंज टूटती है हर बार वापस मार्केट अंदर आ जाती थी. रेंज टूटती थी और वापस मार्केट अंदर आ जाती है, एंड डिड नॉट मेक अ डाउन मूव towards the low side and stayed between the VWAP and to the low side. We did not break through this and ending up into a good nice uniform distribution. तो जब मार्केट ऐसी किसी विजुअल रेफरेंसेस के बीच में फंस जाती है तो मोर ऑफन देन नॉट वो नेक्स्ट डे ब्रेक होते ही हैं, और हम क्योंकि एक बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट के पास भी हैं तो हो सकता है कि नेक्स्ट डे एक्टिविटी की ज़रूरत भी ना पड़े और हम नीचे की तरफ जाएं. वो हम देखेंगे जब हम चार्ट्स में आएंगे. बट इससे हमें पता चलता है कि आज का दिन जो इन्वेंट्री थी दैट वाज इन द लोअर टाइम फ्रेम जो है उनके हाथ में थी, क्योंकि एवरी टाइम व्हेन देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट दैट हैपन्स मार्केट इज बीइंग पुश्ड अप. दैट मीन्स जब भी यहाँ से कोई सेल कर रहा है वो अपना छोटा सा ही प्रॉफिट लेकर के वापस बाहर आ जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट सम बाइंग कम्स एंड मार्केट गोज अप बैक अगेन, देन अगेन सम सेलिंग कम्स एंड देन अगेन सम बाइंग कम्स, एंड दिस प्रोसेस ऑफ selling and buying in a very small range, booking profit too early, selling from here and then booking profit towards the some visual reference, that is been happening. And when that happens then the inventory is in lower time frame hands. हायर टाइम फ्रेम का हमें कैसे पता चल पाता है? जब कोई रेंज शिफ्ट होती है. दैट मीन्स अगर मार्केट में कोई भी प्रीवियस डे की रेंज शिफ्ट हुई है, जैसे कि अगर मार्केट में एक एक्शन यहाँ पे है और दूसरा एक्शन यहाँ पे है, और हमें पता चला है कि हम आज अपने जहाँ पे भी ट्रेड एक्टिविटी कर रहे हैं वहाँ पे हमने भी अपनी रेंज बनाई. अब इफ़ वी जस्ट ब्रेक आउट ऑफ दिस रेंज, that can happen, but it can come back down as well. But if it continues, it sort of does a absorption of demand here. Demand is coming from you can say from this HVM and continues, then you get to see that the range has been shifted from the daily जो आज का रेंज है उससे भी बाहर शिफ्ट हुआ है. प्रीवियस डे की रेंज के भी आप टॉप पे जाने की कोशिश करो. दैट मीन्स द हायर टाइम फ्रेम इज नाउ इन चार्ज बिकॉज दे हैव शिफ्टेड टूडेज रेंज. सो दैट मीन्स दैट गिव्स एन आइडिया ऑफ अ हायर टाइम फ्रेम एक्टिविटी की वहाँ पे आपका जब तक एक हायर टाइम फ्रेम का ट्रेडर नहीं आएगा जिसका टाइम फ्रेम इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम से ऊपर है तब तक ये रेंज शिफ्ट नहीं होगी. दैट इज़ हाउ यू कैन गेट टू सी फ्रॉम दीज structures of market profile. Then these are the structural developments, that's what we say, and time frame segregation. हम time frame segregation इसी के थ्रू कर पाते हैं, राइट? चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारा फिर क्या होना चाहिए. तो जो नेक्स्ट स्टेप है जो शॉर्ट टाइम फ्रेम के हम बारे में बात कर रहे हैं कि अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम पे हम ये ट्रेड्स ले रहे हैं तो उसमें आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. ऑफकोर्स हमने इन बातों के बारे में कई बार बात कर लिया, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू जस्ट सी देम व्हाई यू टेक द ट्रेड वंस इट्स हैपनिंग, एज वी स्पोक अबाउट द पोटेंशियल ऑप्शन पाथ.
कि वंस इट्स हैपनिंग आफ्टर दैट, लेट्स से कि आपको सारे पॉइंट सही मिल गए, आपको अपना एक अच्छा ओपन मिल गया, आपको अच्छा अपना एक ट्रेड सेटअप मिल गया, आपने अपना एक एंट्री पॉइंट ले लिया, एक स्टॉप लॉस लगा दिया और अब आप इन प्रॉफिट का वेट कर रहे हैं, एंड दैट इज इट, एंड देन यू कैन क्लोज योर आइज. नो, यू कैन नॉट क्लोज योर आइज, यू हैव टू स्टिल सी हाउ इज द ट्रेड फैसिलिटेशन हैपनिंग विद योर डायरेक्शन. क्या जहाँ पे आपने लिया है उसे पॉइंट बाय पॉइंट क्या वो सही जा रहा है नहीं जा रहा. फॉर दैट वी हैव टू सी हाउ द ऑप्शन इज going up, like if of course, because you will be taking as a shorter time frame trade, so you would need to have those let's say अगर आपका व्यू अप का था तो you want to have market to make higher highs and higher lows after every small interval, and rather than just staying in some sort of sideways activity, right? You don't want to have that once you have entered. Cool. So those things you have to monitor कि कहीं कोई शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आपका जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो इट्स अ गुड आइडिया टू जस्ट मूव आउट, बिकॉज यू ऑलवेज वांट टू एंटर एट सम पॉइंट वेयर देयर गोना बी अ क्लियर व्यू ऑफ marking the price up rather than spending too much time in one range. अदरवाइज आपका जो आपका प्राइस डिफरेंशियल है वो नहीं मिलेगा और सिर्फ टाइम इधर ही स्पेंड होकर के आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा और फिर दोबारा से इसी रेंज में जा करके आपको ल्योर करेगा कि आप दोबारा एंटर करें. सो यू हैव टू वॉच आउट फॉर दीज थिंग्स. Then we don't need to try to predict market as we spoke about in auction market, potential auction path, and this is what we are talking about. Potential auction path are based on the objective of the time frame controls, and potential auction path includes expected and unexpected behavior. ये हम बात कर चुके हैं. That's how you need to draw these things. But monitoring is very important, the one that I'm talking about here, कि जब आप इससे मॉनिटर करना शुरू करेंगे अगेंस्ट योर पोटेंशियल ऑप्शन पाथ, जो आपने सोचा था कि मार्केट आज अप जाने के लिए अगर यहाँ ओपन होगी और ये बिहेवियर करेगी और ऐसा होगा, ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर होगा, तो उसका नेक्स्ट रिजल्ट ये होना चाहिए. आप उसे मॉनिटर करेंगे हर एक स्टेप पे, और उसे मॉनिटर करते करते अगर किसी भी एक स्टेप पे आपको लगता है कि द एक्सपेक्टेड बिहेवियर इज़ नॉट फॉलोइंग थ्रू, देन इधर यू बुक योर प्राइस half, like you book your position into half, or you just at least come out of the trade if it's not following your potential auction path. See the expected behavior is happening or not, or unexpected behavior is about to happen otherwise. Then make a trading decision in the current market development that warrants it. Okay. So these are the things that you have to do. You don't have to just find out a good setup, but you have to then later on monitor as well that how's it going when you have entered the trade. And if it's happening good, then you stick on it, stick to it. And if it's not working into your favor with following your potential auction path with your expected behavior, then you know that on the other side there is a chance. And now that gives you another edge कि अच्छा अगर इस तरफ नहीं आपको expected behavior के chances अब fail होने के लग गए हैं, तो unexpected behavior कभी भी किसी भी टाइम ओवरटेक कर लेगा, तो आप अपने पोजीशन को फ्लिप भी कर सकते हैं. अब दैट डज नॉट मीन दैट यू कैन, इन मार्केट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड being rigid is never gonna help you. So you cannot say, and there is a little, it can be taken as a misleading thought, but if you are very fluid with the market, now fluid does not mean that every time, as I said, market does not go up like that, right? It goes up like this, sometimes break up the structure as well and then goes like this, right? If it has to go up. So I'm not saying ki be fluid, that means once you have started your journey like this and there is a pullback that comes and you say, oh, it's a reversal, I should come out, then you will be on a roller coaster. Market will take you like up and down everywhere because you're following the price. So I'm not saying that you follow the price, that when it's showing up you're thinking positive, when it's showing down you're thinking negative, now I should reverse my position. Not that the idea. You use the whole understanding of market that we have spoken about in all these 36 days, and with that, when that expected behavior fails, then you know that things are changing rather than just the price is changing. There is a difference between that, and with that idea you should be fluid. So let me say it again, you're not fluid with the market movement. Market movement will go up and down continuously, that's the nature of it, but you have to be fluid with your expected and unexpected behavior. कि अगर आपने expected behavior के अराउंड अपना ट्रेड का सेटअप करा है और अब आपका इन्फॉर्मेशन सेट इतना अच्छा हो गया है कि आप अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर को फॉलो होते हुए देख सकते हैं, कि आपको दिखाई दे रहा है कि मेरे एक्सपेक्टेड बिहेवियर की परसेंटेज, और ये कब होता है, ये बहुत एक दूसरे से कोरिलेटेबल है. ये ऐसा है कि जब आपको लग रहा है कि 100%, तो ऐसे कुछ नहीं होता, बट लेट्स जस्ट से कि ये 100% अभी एक्टिवली एक्सपेक्टेड बिहेवियर फॉलो करने वाला है. लेट्स से इट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ सम पर्टिकुलर लेवल,
यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ हमारा सप्लाई हो रहा है किसी एक लेवल पे आके, ये एक लेवल है, उस पर एब्जॉर्प्शन सप्लाई हो रहा है, तो आपको पता है कि ये एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर है कि हम ऊपर जाएंगे इसे ब्रेक करके. But then suddenly you realize कि it is and that comes with the time, the time that you're going to give to the market. Suddenly you realized, or maybe at a smaller time frame, you get to see some nuance जिससे आपको दिखाई दे कि expected behavior तो ठीक है, but it has taken a lot of time now. Then you know the unexpected behavior is next thing to play. That means some of the people going to leave their position. There will be some sort of inventory adjustment break, continuity, or maybe just inventory adjustment break and just sweeping and go up. That can also happen. So when these things starts happening, तो आपने एक्सपेक्ट करा था कि मार्केट शुड जस्ट टेक दिस मच टाइम to break through this level, but it has given some extra time which is not making you feel comfortable. तो suddenly इस चीज़ का परसेंटेज थोड़ा सा कम होके 60, 50, 40 होता चला जाएगा, और इस चीज़ का परसेंटेज 0 से बढ़ करके जैसे जैसे ये कम हो रहा है 40, 50, 60% बढ़ता चला जाएगा. और जब ये चीज़ होना शुरू हो तो it is not about price, it's about your behavior that you're trying to see on the structure. When that start happening, what you can do is either you can just reduce your position, reduce your risk, or just come out of it totally and wait for some good opportunity to enter again. If it gives a pullback, sweep the liquidity and go up, then you know now it's very much confirmed that it's going to go there. Then you can enter, right? Break out of this range, or else it breaks and goes continue down and then gives a pullback. Then you can sell from here to continue to the downside motion. I hope that makes sense. So that ways you can be fluid with your view. You don't have to be very rigid with your view. So with market you have to be very fluid. ओके तो आपको इसी वजह से अपने पोटेंशियल ऑप्शन पाथ बनाने होते हैं और उसके थ्रू आपको चलना होता है. और अगर वो चीज़ मॉनिटर करते करते आपको सही फॉलो थ्रू नहीं दे रही है, then be ready to change your view as well, not with the price but with your analysis, right? So making trading decision in the current market development, it needs it has to be given, right? Then let's just go to the next part, which is trade setups, which is try to see if one of the trade setup is developing, and if it is developing then take a trade quantity per as per your money management rules. And if it does not stay on that lines, then staying out of it is also a valid trade position, the one that we just spoken about right now. कि जब भी हमने अगर कहीं पे एंट्री का पॉइंट सोचा कि इस पर्टिकुलर लेवल पे शायद एब्जॉर्प्शन हो रहा है और यहाँ पे हमें एंटर कर लेना चाहिए किसी भी लोअर एरिया में, बिकॉज इट माइट जस्ट गो अप इफ इट्स सप्लाई एरिया जहाँ पे एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रही है और ये एब्जॉर्प्शन ऑफ सप्लाई चल रहा है, तो वी प्रिज्यूम दैट इट्स गो अप. बट इन दोनों के बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट आता है कि अगर ये नहीं भी हो रहा है तो स्टेइंग अवे ऑन द साइड लाइन्स, कमिंग आउट ऑफ दिस ट्रेड एंड नॉट बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इट इज ऑल्सो अ ट्रेड position. So no trade in the market, no position in the market is also a position. Don't think it's not a position, right? And it's a healthy position if you're not able to understand it. Then keep monitoring the risk even after taking the position. Keep monitoring the risk. कि अगर हमने position ले भी लिया है तो उसका risk हम monitor करते चला जाए. At any point of time the risk is begin to come out of your comfortable zone. You should be just coming out of it and then wait for another entry, or maybe let the trade pass. With that ways you're gonna gain most important thing, and which is not the monetary gain, but you will gain win over FOMO. If you can develop a habit of I was in a trade, I decided to come out, then market just went into my direction and I'm okay with it. It will pinch, of course, you're not like a machine. It will pinch, but when you're okay with it, I'm like ठीक है इस बार नहीं था, okay. And when you're okay with it, that means you did not take any monetary loss, right? In our Indian currency, you did not take any monetary loss, but you just missed a trade opportunity, which is fine because market is full of opportunities. You just have to keep your capital safe, and once it's safe, you can get into another opportunity, and maybe another time, 2-3 times you might just come out, which is fine. Then there are going to be some other elements that you may have to focus. Maybe you're too much
maybe you're too much fidgety about your position right now because maybe the position size is big, but if the position size is small, then you can keep your stop loss a little bit deeper, and you know it might not gonna get hit, or even if it hits, it does not hamper your say longer trading view. So then that way it won't trouble you that much. But if entering into a position and staying there give you anxiety, then some other things are there that you have to take care of. But if you are in your control and you enter and you don't find comfortable and you come out, decide to come out, and market goes in your direction and you're okay with that, that also gives you a victory over FOMO, which is a good gain. In later years you'll be very happy to have that. Then at any point of time, risk in your position or in your time frame is untenable, because you really don't know what's going to happen next. So it's better to get out of your position at any point of time when you see it either in profit, or if it's trying to go against your expected behavior, right? चलिए, उसके बाद हम देखते हैं द ओनली डिफरेंस इज फॉर हायर टाइम फ्रेम इज, ये तो हमारा सारा शॉर्ट टाइम फ्रेम पे था. अब अगर इसी चीज़ को हम हायर टाइम फ्रेम के लिए लेके चले, तो हायर टाइम फ्रेम के लिए हमारा ओनली जो डिफरेंस रहेगा वो यही होगा कि इंस्टेड ऑफ ट्रैकिंग ओनली द yesterday trade, we need to take care of last few days activity और couple of weeks कि अच्छा पूरे हफ्ते में क्या चल रहा था, बिकॉज आपका टाइम फ्रेम अब थोड़ा बड़ा हो गया होगा. अब when I say higher time frame, that means I'm talking about that you don't want to close down your position on one single day. Maybe you're thinking of taking a position and holding it for days or a week, or maybe weeks. And when that thing happens, then you have to see as well on the left side what had happened in the same quantity. That means अगर आप कई दिनों तक पोजीशन को होल्ड करने की सोच रहे हैं, तो आपको कई दिनों की ट्रेड एक्टिविटी को देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है. सो यू हैव टू शिफ्ट योर टाइम पीरियोडिसिटी ऑन द चार्ट एज वेल. यू डोंट वांट टू देन सी ओनली 5-minute chart. You want to see a daily chart or a weekly chart, what's happening. See bigger levels, where are the bigger supply or demand areas are drawn. Now we need to monitor trade facilitation on multiple days to find out that thing and what market is trying to do. Context बनाना बहुत ज़रूरी है. अगर आपने वो बनाया तब आप इस तरफ भी ट्रेड ले पाएंगे. You need to make notes of higher time frames like कि इसमें जो भी हमारे सुपर शॉर्ट टाइम फ्रेम है वो क्या कर रहे हैं, और जो हमारे थोड़े से लेसर शॉर्ट टाइम फ्रेम ट्रेडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं. हमें इनके भी नोट्स बनाने होते हैं, क्योंकि कभी कभी जो शॉर्ट टाइम फ्रेम ट्रेडर होते हैं वो भी अपनी क्वांटिटी में ज़्यादा हो सकते हैं, एंड दे कैन चेंज द effect of higher time frame. तो it's not only that you have to just take care of only higher time frame पे सिर्फ higher time frame के weekly या daily के ही positions को देखना है. कभी कभी हाफ एन आवर या 15 मिनट की जो कंसोलिडेशंस होती हैं वो भी हैम्पर कर सकती हैं एक पर्टिकुलर मूव को. तो आप जब भी कभी अपना टाइम फ्रेम चूज़ करें, उससे एक ऊपर और एक नीचे दोनों तरफ की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को आपको मॉनिटर करना चाहिए. कि लेट्स से कि अगर मेरा टाइम फ्रेम जो मैंने चूज़ करा है 15 मिनट का है, कि मैं 15 मिनट के चार्ट्स को मॉनिटर करके कुछ सपोर्ट या रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, तो आई डोंट हैव टू जस्ट ओनली सी 15 मिनट्स. आई कैन जस्ट गो वन स्टेप डाउन एंड से 5 मिनट एज वेल कि 5 मिनट पे क्या चल रहा है, एंड आई शुड बी गोइंग टूवर्ड्स द वन स्टेप अप एज वेल कि हाफ एन आवर पे क्या चल रहा है. ठीक है, दैट वेज आई गेट टू नो कि हायर टाइम फ्रेम मेरे से एक टाइम फ्रेम ऊपर वाला टाइम फ्रेम जो है वो क्या कर रहा है, और एक टाइम फ्रेम नीचे वाला टाइम फ्रेम क्या कर रहा है, एंड अकॉर्डिंगली देन यू कैन सी द अर्ली साइंस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ एग्जॉशन और कंटिन्यूशन इन टू योर डायरेक्शन. One thing you need to remember is that market development in the higher time frame will take more time, of course, as compared to shorter time frame, because की candles को बनने में time लगेगा. So you really have to be patient. तो जब भी आप ये हायर टाइम फ्रेम का ट्रेड लेंगे, तो आप किसी भी छोटी मूवमेंट पे पैनिक करके बाहर ना आए. You have to be then keeping the size of your position such a way that certain like जैसे मैंने बताया कि आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम को भी मॉनिटर करके रखना है. तो हो सकता है कि मान लीजिए आपने कोई एक ट्रेड एंट्री ली है जो कि आप होल्ड करना चाह रहे हैं फॉर अ वीक, because you don't monitor the market that continuously. तो अगर कोई let's say let me just draw some candlesticks for you. Let's say ये कोई अगर वीकली का रेफरेंस है जहाँ से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाया, और अब मार्केट कुछ टाइम बाद सब कुछ करने के बाद जब वापस इधर आ रही है, राइट, तो आपको लगता है कि यहाँ से मार्केट सबसे पहला इफेक्ट दे पाए ऑफ लेस टाइम एंड जस्ट टच दिस एरिया एंड देन कम डाउन, एंड मार्केट इज रीचिंग देयर. And as we spoke about it, sometimes it can just do that it can reach there and just get rejected, and you might just get to see a volume profile like this. In a candlestick chart you might just see a candle like that at your time frame. If this is a weekly or a daily, let's say it's daily, then you might see this. That's fine. Or let's say if it's weekly, then you might see this for one day, then it's a good thing. But what
happens that it just reaches there, but the next because it's weekly, and if you bring it to daily, then you might just see this weak candle broken down into daily, something like this. And you will see that market is not rejecting, it's a continuation. But then one day market just gapped down and just week finished somewhere here. Then you see that the whole area has become a tail, and market closes the week here and it started the week here. So the candle of the week is looking like this, and at the end of the week it's like this sort of candle after this sort of action. When these things happen, तो आपको इस पर्टिकुलर डे के लिए भी अपनी पोजीशन में अगर अगेंस्ट जाना भी पड़ा, तो आपका ये नहीं कि पिन पॉइंट एंट्री, एक हायर टाइम फ्रेम पे पिन पॉइंट एंट्री से ही मार्केट चेंज हो जाए। शायद वो डे उस दिन के ऊपर निकल भी जाए, बट शायद नेक्स्ट डे आपको फॉलो थ्रू दे। तो इसीलिए कभी कभी आपको अपनी पोजीशन का साइज इस तरीके से रखना चाहिए कि अगर मार्केट उन लेवल से ऊपर जाके दूसरे लेवल को टैप भी करती है, तो फॉलो थ्रू के लिए आप 1 या 2 दिन रुक भी पाए, मतलब एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के 1 या 2 कैंडल को देख भी पाए। नहीं तो जैसे ये कैंडल ऊपर आई थी तो आप अपनी पोजीशन से निकल जाएंगे, और नेक्स्ट डे कैंडल जब नीचे जाएगी तो बिल्कुल आपकी डायरेक्शन नहीं गई, जो आपने सोचा था वही हुआ, पर क्योंकि वीक की कैंडल थी और आपने डेली एक टाइम फ्रेम छोटे वाले को ही सिर्फ देखा और हाई टाइम फ्रेम को नहीं देखा, तो ये चीज़ें नहीं हो पाई। तो इसीलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों टाइम फ्रेम को देखें, शॉर्टर टाइम फ्रेम को भी और हायर टाइम फ्रेम को भी, व्हेनेवर यू आर टेकिंग अ ट्रेड, राइट। नाउ क्विकली लेट्स सी ऑल दीज एग्जांपल्स। जो भी हमने सारी बात करी है, ये डेफिनेटली डिपेंड करेगा। अब ये आपको सुनने में बहुत लग रहा होगा कि कितनी सारी चीज़ें मॉनिटर करनी है, बट आफ्टर सम टाइम दिस बिकम्स जस्ट अ वेरी स्मॉल हैबिट, बिकॉज यू डोंट हैव टू सी everything at once. You have to see everything once at a time, you know. So these things not gonna like come on to you and you have to figure out. ये एक साइकिल में होगा, पहले ओपन होगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे हमने शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए बात करी थी कि हमारे पास बहुत टाइम होता है, दिन खत्म हो चुका है, तो आप जा कर के घर पे देख सकते हैं कि आज का दिन कैसा रहा, उसका वैल्यू एरिया कैसा रहा, प्रोफाइल शेप कैसी रही, उसने क्या रेफरेंस बनाए कल के लिए, बड़ी पिक्चर में क्या कर रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऊपर जाते जाते एक रिजेक्शन आएगा, बट ये तो वहीं पर चिपक गया है या अटक गया है, तो देर आर चांसेस कि एब्जॉर्प्शन सप्लाई हो सकता है। ये सारी चीज़ें तो आप दिन की शुरुआत होने से पहले भी कर सकते हैं, एज लाइक योर होमवर्क। सो दिस बिगर पार्ट इज़ जस्ट योर होमवर्क, आई वुड से, राइट। सो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप एक छोटा सा होमवर्क अपनी कल के दिन के लिए कर सकते हैं हमेशा ही। दैट इज़ अ गुड थिंग. That is not going to be something that you have to do instantaneously while the market has opened up. This is just a part of homework only. The next day when market opens up, that is the part of your potential option path that you have created, कि अगर मार्केट मेरी इस पर्टिकुलर लेवल से ऊपर खुली और उसने कुछ ऐसा करा तो मैं ये करूँगा, और अगर नीचे खुली और उसने कुछ ऐसा करा तो मैं ये करूँगा, और अगर यहाँ पे ही खुली तो मैं थोड़ी देर वेट करूँगा, और कुछ नहीं हुआ तो कोई रेंज बनेगी तो ब्रेकआउट होगा तो मैं ब्रेकआउट को ट्रेड करूँगा। आप ये पोटेंशियल ऑप्शन पाथ अपने दिमाग में पहले ही बना सकते हैं, और उनको फिर धीरे धीरे फॉलो कर सकते हैं। कैसे कि प्रायर डेज से आप ऊपर खुले हो या नीचे खुले हो, रेंज एक्सटेंशन आपकी कैसी रही है, आईबी रेंज कैसी रही है, हमारा वैल्यू एरिया जो था उसके प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया के साथ कैसे उससे रिएक्ट कर रहा है, एक्ट कर रहा है, जब वैल्यू एरिया पे पहुंचा क्या वहाँ से रेजिस्टेंस या सपोर्ट लिया उसने या नहीं लिया। तो ये सारी चीज़ें आपको फिर धीरे धीरे जब आप जाएंगे नेक्स्ट डे के लिए, तो आपको दिखाई देगा कि वन टाइम फ्रेमिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, विच इज़ जस्ट a simple thing of what do you say, range extension only, right, कि रेंज एक्सटेंशन हो रहा है नहीं हो रहा है, बट ये एकदम से नहीं होगा, ये आपकी शॉर्टर टाइम फ्रेम में 5 मिनट पे भी बहुत धीरे धीरे होगा। तो आप इसे देख सकते हैं कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपने जो पोटेंशियल ऑप्शन पाथ बनाया था क्या उस पर ये खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, अगर है तो मुझे कहाँ एंट्री लेने का मैंने सोचा था किस लेवल पे। तो वो सारी चीज़ें जब आप मैच करते चले जाएंगे तो ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी। आपको सिर्फ ये देखना है कि मार्केट डेवलपमेंट कैसे कर रहा है, किस टाइम फ्रेम पे आप हैं, उसके एक हायर और लोअर टाइम फ्रेम को आप देख रहे हैं, विच टाइम फ्रेम की एक्टिविटी आज कंट्रोल में लग रही है, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कैसा है, और टाइम फ्रेम का सेग्रीगेशन क्या है। ये सारी चीज़ें जब आप करना धीरे धीरे शुरू करेंगे तब ये एक हैबिट बन जाएगा और इस ट्रेड प्रोसेस में आना बड़ा ईजी हो जाएगा। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ द ओनली प्रोसेस यू कैन टेक ट्रेड, बट दिस इज़ वन पार्ट ऑफ इट. As I said, in the initial days, it might just look like there's too much because we've spoken about candlesticks as well, we've spoken about so many different things as well, और ये आपको बहुत overwhelming लग सकता है. But trust me, जब हम अब it's almost like a 36th class, and there are like 4 more classes left for me to finish this theoretical part, and then we will be doing only the online session of our trading
That means in the daytime I'll be trading and I'll be putting those videos up in the live market. So if you guys get time, then you can see it in the morning. Otherwise, in the evening as well, I trade forex market, and you can see that as well. But of course, those markets are a little different from our markets, but some structures are similar. So you will see me doing that after from next week onwards, from Monday onwards, we'll have that. So from Monday onwards, you'll be actually taking all these concepts and putting them onto the chart, and then coming to the market and seeing it for yourself, right? बट उससे पहले ये सारा ट्रेड प्रोसेस जो इतना भी हम कर रहे हैं, ये ओवरवेलमिंग लग सकता है, बट ये ओवरवेलमिंग है नहीं. बिकॉज जैसे जैसे आप किसी जो हमने एक लैंग्वेज का एग्जांपल लिया था कि जैसे जैसे आप किसी एक लैंग्वेज को सीखना शुरू करते हैं, तो यू नो इट फील्स वेरी हार्ड इन द इनिशियल डेज, but slowly and gradually you give time to it and it becomes normal. After some time it feels like it's fine, it doesn't make that much difference to you, right? So we need to see all these things, and after some time it becomes very natural, it becomes like a second nature to you, and you have to be patient for that time. Nothing comes without giving time to it, and never feel like कि ये तो नहीं हो पाएगा, because it is actually not that difficult. The difficult part, I tell you, is not to understand these concepts and all. The difficult part is to stay disciplined. And I will be saying it more often than not. So let's just quickly go through the charts and let's see what's been happening. First of all, let's go to uh, let's go to just market profile charts first, and we get to see what happens in market profile chart. You can see this is the Nifty chart, and we were talking about this particular area. The market is, yeah, I hope you can now see them better. I hope you can see nicely. So this is the let me just show you if you're not able to see it or understand it nicely. I'll just make my lines clear. हाँ जी, तो हमने अपनी जर्नी शुरू करी थी शायद यहाँ से, द फर्स्ट डे, राइट? लेट मी पुट इट. यस, हमने अपनी जर्नी शुरू करी थी यहाँ से. दिस वाज द एबनॉर्मल वॉल्यूम डे with lesser structure, and then we spoke about gap down that happened below this HVN, and then we knew that now is because हम HVN के नीचे आ गए, एक रिजेक्शन एरिया हमारे पास हमें मिल गया है, और कॉन्टेक्स्ट पूरा चेंज हो गया है, और ये एनॉमलीज जो है और ये जो एरिया है ये बड़ी जल्दी फिल हो सकता है. अब मार्केट से बिना फिल करे ही नीचे सीधा ड्रॉप डाउन कर गई, ऑफ कोर्स. So that is a bigger advantageous position with that view of this day. And after that, as I said, market will not just it's not going to be like a tap is open and now it's running down. Then comes the profit booking or the pullbacks or the confusion ki what will happen now. And as you can see, market then started to go into some sort of range. That always happens कि अगर आपका एक डाउन ट्रेंड शुरू भी हुआ है तो एक पुल बैक आएगा. क्या वो पुल बैक ये था और हम उस पुल बैक के बाहर आ गए हैं, या फिर ये पुल बैक ये है और हम अभी भी इस पुल बैक के अंदर ही हैं. दैट इज़ येट टू बी डिसाइडेड बाय द मार्केट्स. सो दिस इज़ द आइडिया ऑफ यूजुअली जब भी आपको ऐसा कुछ मिलेगा स्ट्रक्चर, तो ये कन्फ्यूजन आपको हमेशा रहेगी कि क्या ये पुल बैक ये था जब भी आप चैनल्स बनाएंगे, या ये था जिसने अभी ब्रेकआउट दे दिया है. Now for me, right now this channel, even if I have made it earlier like this, let's say making combining the lower lows of this particular area and made it this way, and when market has gone down over here, it did not go below this. We spoke about this point as well, that it did not go below the previous day low. That in itself is not a very good idea. I see some sort of, that means exhaustion happening. That is no confidence. You're making poor lows as well. When you make poor lows, market tends to fill that area. So it did that, it filled the area but made a consolidation here. Perfect uniform consolidation, a uniform distribution, right? And where is it making a uniform distribution? At the low of it. Is that the sign or symbol for absorption? Yes, of course it is a sign of symbol of exhaustion.
an absorption of this particular demand. So if I have to take out some confusion out of it, and I'm confused between these two channels कि कौन सा active है, I get to choose that this channel that I would have had made earlier is now not active. Why? Because आउट ऑफ दिस चैनल जब आप पहुंच भी गए तो आपने क्विकली इस ट्रेंड को रिज्यूम नहीं करा, आप लो से भी नीचे बंद नहीं हुए, नेक्स्ट डे भी आकर के इस सप्लाई की तरह यूज़ कर रहा है, देन आई गेट टू सी दैट दिस चैनल इज़ एक्टिव, द प्रीवियस वन. अगर इन दोनों चैनल्स में से आपको कोई यूज़ भी करना है तो देन यू गेट टू सी दैट दिस चैनल इज़ एक्टिव. And if this channel is active, then what we are trying to see here, now you can see it very clearly, that this channel in this way is reaching here and not rejecting but absorbing. Now when it's absorbing and there is a holiday now in between, now only two things can happen. Now this comes as a potential auction path. We need to first of all see what is there on the left side. सबसे पहले हम ये देखें कि लेफ्ट साइड में से क्या कोई रेफरेंस आ रहा है इस तरफ, तो विल गो टू दैट, और मे बी वी कैन गो राइट नाउ ओनली. लेट्स जस्ट सी दैट एक बार कि हमारे पास लेफ़्ट साइड में क्या एरिया है. तो अगर मैं इसे लेफ़्ट साइड में आपके लिए लेकर के जाऊँ तो आपको दिखाई देगा कि हमारे पास ये एरिया जो है, ये 3 PPOP जो है ये फिर भी एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं. So it can be a consolidation area of, let me draw it for you. Wait. Yes, I'm talking about these 3 days of consolidation. If I combine them together, this will give you a nice distribution. और इस distribution के पास आकर के आप मार्केट में एक बार नीचे अपना एरिया बना करके रिजेक्ट करके ऊपर पुल बैक ले चुके हो. वो पुल बैक अब इस तरीके से एक्ट कर रहा है. क्या ये कंटिन्यूशन ऑफ द ट्रेंड होगा? कंटिन्यूशन ऑफ द ट्रेंड के लिए ये पूरा एरिया अब इनके पास क्लीन है, क्योंकि कोई भी HVN आप कह सकते हैं वर्जन HVN, बेसिकली समथिंग दैट इज़ नॉट बीन टेस्टेड, ऐसा नहीं है. ये एक एक्सटेंडेड प्रोफाइल की तरह क्रिएट करके गया. समथिंग लाइक दिस इज़ स्टिल हैविंग HVNs दैट आर नॉट टेस्टेड. तो आपका नेक्स्ट एरिया क्या होगा? अगर आप गिरेंगे तो आप इस एरिया की तरफ पहुंचेंगे, बीच के किसी एरिया पे नहीं रुकेंगे बहुत ज़्यादा. और ये फिर बाद में देखने में जब आप लेटर ऑन हिस्ट्री में आएंगे आपको दिखाई देगा कि एक डाउन ट्रेंड हुआ करता था जिसका एक अप पुल बैक आया और फिर वापस मार्केट डाउन ट्रेंड में चली गई. ये कुछ ऐसा देखने में लगेगा लेटर ऑन. नाउ दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट डेज प्रोफाइल, राइट? सो इट विल हैपन इन डेज, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट minutes, like 15 minutes or 30 minutes. I'm not talking about that, but I'm saying that this area is a cleaner area now in between this range. Yes, I hope you can see this. I'm talking about this is the pullback. This has been tested. This is the next station, and this is the trend change. ये एक अप ट्रेंड था अभी तक. कब तक? जब तक हम यहाँ पे थे. ये एक बड़ा अप ट्रेंड है. आई एम नॉट नेग्लेक्टिंग द फैक्ट, आई डोंट हैव टू, बट व्हाट आई एम सीइंग इज नाउ आई हैव टू मेक श्योर कि आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे पता हो कि क्या चल रहा है. शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हमने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है. मार्केट पहले भी एक बार यहाँ पे आ चुका था और इस एरिया ने डिफेंड करके मार्केट को ऊपर भेज दिया. अब जो मार्केट नीचे आ रहा है तो जितने भी एरियाज़ थे, ये जितने भी इनके डिफेंडिंग पॉइंट्स थे वो सब फेल हुए हैं. जितने भी ये डिफेंडिंग पॉइंट्स या एनोमलीज थी सब फेल हो गई हैं, राइट? मार्केट नीचे अब जाते जाते अपना प्रोफाइल बनाते हुए एक पुल बैक दे रहा है. तो उसने इस एरिया के इस स्विंग के, अगर मैं इस स्विंग को आपके लिए ड्रॉ करूं तो उसने पर्टिकुलर इस स्विंग को इंटरनली ब्रेक कर दिया है. यहाँ से लोअर लो एक बना दिया है ये वाला, और अब ये ऊपर की तरफ जाते जाते दोबारा से नीचे की तरफ जब आ रहा है तो अब इसके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं. फर्स्ट, कंटिन्यू इट्स मेन ट्रेंड विच इज़ दिस, एंड दैट इज़ माई फर्स्ट व्यू. ठीक है, दैट इज़ माई फर्स्ट व्यू. वाई? बिकॉज इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक एब्जॉर्बिंग हियर एज वेल. It's not getting rejected from this level. So what can happen after 1 day छुट्टी, that you might just go gap down
and continue towards downside. Now that will happen only in one condition, or only in two ways. How? Market might just open somewhere here like a gap down, start going up a little bit and get rejected and go down. That is one way of doing it. Market might start here only, get rejected and go down. That is the second way. Everything that happens below it, जो भी सिचुएशन इसके नीचे की तरफ होगी, इस एरिया से जब हम नीचे खुलेंगे, अब आपको देखने में बड़ा सिंपल समझ में आ पा रहा होगा कि हम बात करें कि 24,150 से अगर हम नीचे खुलेंगे तो यही एक रेफरेंस होगा जहां से मार्केट वापस रिजेक्ट कर जाना चाहिए. लेटर ऑन हिस्ट्री में आपको देखने में ये लगेगा कि मार्केट नीचे आई, पुल बैक दिया और वापस नीचे की तरफ चली गई. ये एक अच्छा स्ट्रक्चर फिर भी देखने को मिलता है. क्यों? क्योंकि आपको पुल बैक जहाँ से मिला है वो ये HVN है, और यहाँ से कॉन्टेक्स्ट जो स्ट्रॉन्ग है वो डेफिनेटली आप ऊपर गए ज़रूर होंगे, बट आप नीचे की तरफ जर्नी इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आप चैनल को तोड़ चुके हैं जो पुल बैक का था, मेन कंटिन्यूशन ऑफ ट्रेंड में आ चुके हैं, और ये कंटिन्यूशन अब इस तरफ जाने के लिए तैयार है. ये है पोटेंशियल ऑप्शन पाथ दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सपेक्ट. Against it, when market try to do something different, that would be my unexpected behavior and I'll monitor it. So ये था हमारा पहला पॉइंट. अगर मार्केट नीचे खुले तो उसको क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके साथ ये पुल बैक का सिनेरियो हो सकता है. अनदर थिंग इज कि मार्केट खुले ही इस पूरे HVN के नीचे. अगर इस HVN के नीचे मार्केट खुलती है तो फिर वो सिर्फ इसी रेजिस्टेंस को लेकर के ड्रॉप कर सकती है, और इवन बेटर कि वो खुले और सीधा एक ड्रॉप डाउन, जैसे कि हमेशा आपको यहाँ पे देखने को मिला था कि मार्केट खुलती है और सीधा ड्रॉप डाउन होकर के फिर पूरा दिन नीचे स्पेंड करती है. दैट कैन ऑल्सो हैपन दैट मार्केट ओपन्स अप हियर एंड स्ट्रेट पुश आपको ड्राइव मिले इनिशियल बैलेंस में, एंड देन मार्केट ऑलवेज ट्राई टू गो अप बट फेल्स एंड रीच हियर. एवरी अदर रीच पॉइंट विल नॉट बी एबल टू पुश द मार्केट अप बिकॉज द लास्ट पॉइंट ऑफ डिमांड जिसे हम बोलते हैं वो यहाँ पे है. जब तक ये लास्ट पॉइंट ऑफ डिमांड पे वापस मार्केट नहीं आएगा इसे टेस्ट करने, जिन लोगों ने इस पूरी चीज़ को जनरेट करा था, तब तक मार्केट नीचे गिरती जाएगी. तो लास्ट पॉइंट ऑफ डिमांड इज़ एट 23,600 और 23,550 यू कैन से. तो 550, 23,550 या 23,600 के आसपास तक मार्केट इस एरिया को कवर करने आ सकता है. क्या वो एक दिन में हो जाएगा, क्या वो 2 दिन में होगा, क्या वो पूरे हफ्ते का कैंडल स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज़ गोइंग टू टेल अस मोर अबाउट व्हाट कैन हैपन नेक्स्ट. अगर ये एक ही दिन में हो जाता है, that is a very good idea, that should happen because it's a continuation of trend. But if it happens in a very sluggish way, 1 or 2 days or something like that, then it's not a very good idea and market trend to go back up depending कि वो किस तरह का बीच का स्ट्रक्चर बना के जा रही है. अगर वो वीक स्ट्रक्चर बना के जाएगी तो वो वापस ऊपर की तरफ पुश करते हुए एक हायर टाइम फ्रेम की तरफ पहुंचने से पहले इस पूरे एरिया का जो ये कंसोलिडेशन था, भले एक चैनलाइज कंसोलिडेशन था, इसके साथ टैग होने की कोशिश करेगी. I hope you can make sense of these things now. Now this is the one area that we've spoken about. If market opens up here at the bottom of this day activity after 2 days. But what happens if market opens up here? All these people who are thinking like me right now, being short and doing this and that, if they are in position, I am not in position, but if they are in position, what do you think they will do? They will think that our plans of seeing the market going down are not working. Let's just cover our losses or reduce our position from the sell side, and to reduce their position from the sell side they need to buy, and if we open here and somebody needs to buy, they will quickly buy, and in the in the initial moment the up drag can be fast and might not even stop here and try to go up. And if you get some sort of this sort of structure, that will tell you, I'll just take the previous ideas off so that आप थोड़ा ध्यान से देख पाए. Sorry, I'll just take this idea off. ये आइडिया हम डिस्कस कर चुके हैं नीचे जाने का. अब हम बात करें कि अगर सेलर्स जो ऑलरेडी सेलिंग पोजीशन में हैं, अपनी पोजीशन छोड़ के जो गए होंगे मार्केट में ओपन, अगर उनके लिए मार्केट जा कर के कल यहाँ पे ओपन हो जाए, उनका आइडिया, उन्हें भी ये इसी तरह से चीज़ें दिख रही होंगी ऑब्वियसली, राइट. समबडी मस्ट बी थिंकिंग लाइक दैट. बट अगर उनकी पोजीशंस हैं और मार्केट उनके प्लान के अगेंस्ट यहाँ ओपन होती है, अगर वो यहाँ पे ओपन होती है तो इनिशियल बैलेंस में ही या तो वो टिप लेते ही ऊपर हो जाएगी या फिर स्ट्रेट अवे अप ड्राइव भी ले सकती है, क्योंकि वो गैप अप खुली है इस पूरे जगह से. तो आपको फिर ये चीज़ फ्यूचर में जब आप कभी दोबारा आके देखेंगे हिस्ट्री में, तो ये चीज़ एक तरह का सिर्फ पुल बैक और कंटिन्यूएशन ऑफ द रेंज लगेगा, एंड मार्केट विल वेरी शार्पली एंड गोना स्टार्ट शूटिंग अप फॉर द अप हायर लेवल्स. और अप हायर लेवल में कहाँ पे है, जहाँ से लास्ट सप्लाई आया था, लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई ये है, लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई ये है. बट अगर आप लास्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई के पास इनिशियल ऑफ द डे आर में खुलते हो तो मार्केट की मूवमेंट इतनी तेज़ होती है कि आप उसके थ्रू निकल जाते हैं. और अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ शिफ्ट होएगा. क्यों? क्योंकि ये एक
पुल बैक वाला कंटिन्यूशन जर्नी दिखाई देगा कि मार्केट नाउ नीड्स टू गो ऑल द वे अप टू देयर to find out this HP and to tap this area of 24,650 and then would decide ki do I need to continue or that was a sharp rejection from here and I fall again. Because we have this much activity, so might not fall sharply, just maybe like that, whatever. But you get the idea what I'm trying to say here, I hope, right? So we have our lower areas to tap. वी स्पोकन अबाउट द ओपन एरियाज की अगर वो ओपन यहाँ पे होती है तो क्या हो सकता है, हमने इसकी बात करी कि अगर वो ओपन इस गैप के अंदर इस रेंज के अंदर ही दोबारा हो डिस्पाइट ऑफ दीज एक्शंस तो क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी और उसका रीज़न क्या होगा. अब जब ये किसी चीज़ के पीछे आपके पास रीज़न अटैच हो जाता है तो वो चीज़ें थोड़ा वैलिडेट आप कर सकते हैं और उसे फिर उसके अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर को भी सोच सकते हैं कि क्या हो रहा है. अब जब तक आप ये एक बड़े टाइम फ्रेम पे नहीं डिसाइड कर पाएंगे, ये डेली टाइम फ्रेम पे है एक्चुअली, जब तक आप ये डेली टाइम फ्रेम पे ये स्टोरी नहीं क्रिएट कर पाएंगे, ये एक्टिविटी नहीं समझ पाएंगे और इनका मतलब क्या है ये नहीं समझ पाएंगे, तो आप शॉर्टर टाइम फ्रेम के किसी भी इंडिकेटर या स्मॉल मूव को ही ट्रेड कर पाएंगे, कभी बिगर पोजिशंस में नहीं जा पाएंगे. एंड स्मॉल मूव विल बी देयर फॉर श्योर. मार्केट में छोटे मोटे ये मूव चलते ही रहते हैं, आप इन पर कभी भी ट्रेड कैसे भी कर सकते हैं. मैनिपुलेशन भी उतनी ज़्यादा होंगी फिर ऑफकोर्स. बट एक चीज़ की बहुत अच्छी गारंटी है कि आप जब ये स्मॉल मूव ले रहे हो, अगर आपने अपने आप को अलाइन कर लिया है एक बिगर मूव के साथ, तो आपको ये पता है कि अगर मैनिपुलेशन हुई भी तो भी मेरा व्यू जो है वो अप का है एंड यू कैन होल्ड दिस ट्रेड स्टार्टिंग एट अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, होल्डिंग एज अ हायर टाइम फ्रेम. If you have two positions, book one at a shorter time frame, book one and leave the rest for the higher time frame profit. We'll talk about that later. So right now I'll just close this session. I hope these things I hope these things make some sense to you, and if you'll be able to see the markets like this, then these things not going to be that much chaotic. You see this chart is looking so peaceful right now. Why? Because of course the market is off, that's one thing, but you will see the bigger time frame you reach, the lesser noise you get, and you can see things happening very clearly in front of your eyes कि क्या हो रहा है और क्या नेक्स्ट स्टेशन है. आपको बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगेगी देखने में कि वेयर इज़ द नेक्स्ट स्टेशन. द नेक्स्ट स्टेशन अगर मार्केट नीचे गिरती है इज़ हियर. द नेक्स्ट स्टेशन अगर मार्केट ऊपर जाती है इज़ ऑफ कोर्स इज़ देन समवेयर हियर. तो अगर हम ऊपर जाते हैं तो 24,650 और अगर रुकते हैं तो कंटिन्यूशन ऑफ द अप ट्रेंड देख सकते हैं. बट अगर हम नीचे जाते हैं नीचे चलते हैं तो द एरिया ऑफ 23,600, तो आपको दिखाई देगा कितनी ही वाइड रेंज है. और मेरा व्यू जो है वो बहुत ही छोटे से पॉइंट पे डिपेंड कर जाएगा. इफ़ यू ओपन हियर अ पुल बैक शॉर्ट, इफ़ यू ओपन हियर a pullback long. Sometimes you don't get a pullback and market can just completely fall, then wait for that structure to follow, don't jump. Sometimes over here as well, market can just in the initial hour in the panic might just shoot up and then throughout the day keep falling, but still do not go to any level here and next day or maybe towards the end of the day go up. So you need to understand the context rather than seeing the price कि कौन सी चीज़ कहाँ शूट डाउन कर रही है. कभी भी भागती हुई ट्रेंड को नहीं पकड़ना चाहिए. ठीक है, चलिए, with that note I'll finish this class. I hope these things are making sense. I really hope these things are making sense because आप इन कॉन्सेप्ट्स के साथ मार्केट को थोड़ा सा क्लियरली देख पाएंगे और जब आप देख पाएंगे तो अपनी पोजीशंस को क्लियरली ले पाएंगे और अपना रिस्क आप मैनेज कर सकते हैं. दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट that I had covered as well somewhere in between in some sessions, but I really want to talk about it sometimes when we're gonna start the Monday sessions. So I'll try to do that on tomorrow. I'll do 2 classes. I'll give you one recording, of course, and I'll give you one session at the same time. So in the daytime I'll share a link of the class which will be just a recording of a session so that I can explain some concepts of how the bid and ask values of buyers and sellers work, what are the limit orders and market orders and order flow chart पे आपको कैसे दिखाई देता है स्मार्ट मनी की एक्टिविटी, वो सब चीज़ें हम देख सकते हैं.
or then in the evening at night around 8:30 to 9:30 we'll have a regular session where you can come, and if you have some confusion about anything, you can ask your question. So if you do get time tomorrow 8:30 to 9:30, please do come and ask your questions, because we are about to finish the whole theory part now. The last class would be on Friday, I think, and then Monday onwards we will be live in the market talking about all the concepts that we have spoken about here and collecting them and putting them one thing at a time. All right, chaliye, take care people, good the nights, take the cares, and shabba khair. Bye bye. Shubh Ratri bhi. Okay, bye bye.